8 साइंस का लेसन नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच अप्लाइड फोर्स causes a change in the shape of an object. Answer. Two examples are as follows. First, the shape of the plastic bottle changes by squeezing it. Second, when we compress or stretch the spring, it changes its shape. फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, प्लास्टिक की खाली बोतल जैसे लिम्का की, कोका कोला की ले लें, इसका स्क्वीज करें, बोतल की शेप चेंज हो जाएगी। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेस करते हैं तो इसकी शेप भी बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका ए है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश द रोप, पुल द रोप। बी, a charged body dash an uncharged body towards it, attracts an uncharged body towards it. C, to move a loaded trolley we have to dash it, push or pull it. Fourth, the north pole of a magnet dash the north pole of another magnet, repels. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डी वाले को। The rule to remember is that opposites attract. Every magnet has both a north and a south pole. When you place the north pole of one magnet near the south pole of another magnet, they are attracted to one another. When you place the like poles of two magnets near to each other, that is north to north or south to south, they will repel each other. अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.